Okay. So is my screen visible to all of you? Yes, sir. So Yes, sir. so aggregate 5 aggregate functions. So we have already gone through. We have covered those 5 aggregate functions. So now we will be covering this. So if there is a condition associated with it, okay. If you have a question, the question is straightforward. Okay, what is the total sales, or what is the total profit, or what is the average sales? Okay, the question are very okay. If the question is pretty straightforward and it doesn't have a condition, then max mean count एतरे सब हमरो आंसर हे जिवो कहीं ना जदी जे पचार कि एवरेज सेल्स कोन टोटल प्रॉफिट कोन ओके टोटल सेल्स कोन what is the highest sales, lowest sales, you can get everything by using this 5 aggregate functions, which is your count, min, max, average, okay, then sum. Okay, so these are the 5 aggregate functions which we will use. But if okay, if somebody will ask, okay, what is the total sales? Okay, what is the total sales? What's happening here? So now total sales by Saloni. Okay. So if somebody will ask you total sales by Saloni, okay. So how to find out total sales by Saloni or average sales in okay Germany. Okay. So average sales or total sales one plus total sales in one plus. So now if you look at this question, okay, so if you look at this question has one conditions. What is the total sales? If somebody will ask you what is the total sales, तब आरो sum टा बाहर कर दो. But total sales by Saloni, so आपको केमते find out करिवो? Normally हमें manually find out करिया को हेले हम कौन करिया पड़ियो? प्रथमे filter use करिया पड़ियो. Data को जाके filter कर दो. So एटी कौन करिया? Sales manager Saloni. Okay. So now if you just select here, okay, entire column select column, it is the total sales capacity 9,29,341 and maximum sales 4991, count 269. Okay, so count टा सब बड़े कहाँ count करे, header को भी count कर दिए तो सेते पे count हो जी 268. header भी ଗୋଟେ value. Okay, header को छाड़ी जो मैं control shift down आरो करिवे, I'll be getting 268. average sales जेति की सलोनी रो पर जो आइटम एवरेज सेल होची 3467. it होची maximum sell. This is the total sales. So this is what you can manually do. Manually माने filter apply करके then you can check the count sales whatever. But now I want this to be done in a formula or in a function. So function कौन एथिरे? So total sales पे कि which function you should use? Total sales. Which function? Sum function. But here another thing is total sales by Saloni. So सेमती जेमती हमर aggregate function अछि sum, mean, max, count. सेमती किछि functions अछि sum if, count if,
minif, okay, so minif, average if max if. Okay, so these are called aggregate conditional aggregate functions. So functions रो काम कौन हला जति गोटे क्वेश्चन रे एटी क्वेश्चन रे जति गोटे कंडीशन रोची then you have to use this function. So basically total sales माने कौन मो sum बाहर करिया पे चाहूँ I want to find out sum. So here I have to use sum if function. So sum if function can use करके तुम देखो equals to sum if, okay, sum if तापर से लिख ले range, okay, so range sum if you have to give the range. Sum रा range टा दे देली control backspace करी पुनी formula को बोली comma criteria. So criteria कौन, okay, अच्छा sorry my mistake. So first होची range दबो. So range होची, let's say I want to give range as this, control shift down arrow, control backspace, okay. So criteria is nothing but a condition. So what is condition? So condition is the name has to be, the sales manager name has to be Saloni, okay, close. The name has to be Saloni, close, enter. So I'm not a big fan of some if functions because I used to use some ifs, okay, range, criteria, then some range, okay. So some if re tinta jinso rahile, first hochi range, okay, this comma criteria is Saloni. So को column रा sum टा बाहर करिया पे चाहूँ, control backspace, yes, enter. So we got the same thing, right? 9,29,000 was the total sales, correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically, so you should not use if function, sum if function, because so if you have multiple conditions, suppose I want to find total sales by Saloni in 1+ category, in 1+ product. Okay. If this is the condition, you cannot do it. You cannot, find the answer by using sum if function, because this function can have only one condition. This function allows you to put only one condition. Jadi multiple condition आसेगा जेमती total sales by Saloni in 1+ product. So if you break it down, एक question को जब हम बुझिया को चेष्टा करो, it has two conditions associated with it. I want to find out total sales. This is the task which I want to do. Saloni, okay. The sales manager name has to be Saloni. This is one condition. Second condition होची product 1+ ହେଇଥିବା ଦରକାର. ଯଦି ଦିଟା condition ହେଲା, I cannot write, write these two conditions in this one particular function. So there is another set of functions. ଯେମିତି average if ହେଲା, there's ifs, okay. Control E, okay. Class fill, sum ifs, count ifs, min ifs, max ifs. So तमे जदि ये function use न करियो भी चलिबो, कारण ए function रे तमे जहा करि परिबो, ए जो ifs, sum ifs, count ifs, min ifs, max ifs, average ifs रे same to same जिंसो कर परिबो. Okay, so let me explain that function. Okay, so a function रे हमें कोन कले, a function रे टिके मु बुझे दोचे जे क्वेश्चन थिला total sales by Saloni in 1+ product. So function रे देखो तीनटा पैरामीटर अछि.
I'm a parameter. I don't have to tell you what is a parameter because parameter means the arguments. A function कौन input नौची तीनटा input नौची input को कौन दी parameters or arguments. You might have learned it during your functions topic. So sum if first होची कौन ना range दियो. So मु कहार range देबी माने जोठी मते criteria टाको condition टाको search करियर अछि. So condition होची कौन guys? What is the condition? Saloni. Saloni. Okay. So Saloni mu कोठी पाइबे Saloni को Saloni जो value टा मु को column under रे पाइबे Sales manager. sales manager. So I have to select control shift down arrow. Control shift down arrow simultaneously press kole it will be selecting the entire column. Okay. Control backspace. Okay. Comma there. तापरे criteria means second condition होची criteria. I mean second parameter होची criteria. So criteria होची Saloni. माने कौन होची कंडीशन. सो ए रेंज रे मते सलोनी को फाइंड आउट करियर अछि. सो लास्ट होची कोन सम रेंज. सो को कॉलम रे सम ता तमे फाइंड आउट से लिखुची सम रेंज दियो को कॉलम रे सम बाहर करिया चाहछो वेदर इट इज सेल्स कॉलम और इट इज प्रॉफिट कॉलम और इट इज COGS कॉलम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो आई वांट टू फाइंड आउट सेल्स. ओके टोटल सेल्स. सो टोटल सेल्स ପାଇଁ कि ए जो रेंज ता मु देबी कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल बैकस्पेस ब्रैकेट क्लोज एंटर. So understood this function? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will try to do the same thing by using sum ifs function. Okay. Sum ifs function रे कौन करे पड़ियो sum ifs लिखली bracket start करली. Okay. Bracket start करली से लिखुची जो sum range टा third parameter नेतला sum range it is at a first parameter. Okay. Sum. Okay. First को sum ifs first होची sum range से कुछ sum range ता दियो. So को column रे sum टा मु बाहर करे चाहूची Sales. okay sales रे बाहर करे चाहूची. So control shift down arrow control backspace comma तापरे मोर criteria कोन criteria को मोर condition टा कोन first Saloni total sales, right? So condition होची Saloni. मु second condition को ता कोनी. Let's assume this is my first question. Okay. एटा मु second question एठी लिखिबी. Okay. So एटा होची first question. तापर एठी हम आंसर करू. So equals to once again sum ifs bracket start. Okay. So sum range होची एटा sales रो मु sum बाहर करे चाहूची. Okay. Control backspace comma criteria range because criteria range माने so जो criteria is nothing but criteria होची condition. ए condition टा कोड तमे पाइबो criteria range टा को column. So criteria होची Saloni. The sales manager has to be Saloni. Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. you will find it under sales manager. Yes or no? So control shift down arrow control backspace तमने criteria range टा को मु select कर देली first. Criteria range 1 टाको select कर देली. Criteria 1 होचे कहा को सर्च करबी सेठी Saloni. So clear? Yes, sir. Okay. So जो criteria देखो criteria range 1 criteria 1 criteria range 2 criteria 2 तापर 3 dots लिखाई तमने you can have multiple criterias used in sum ifs. You can use multiple criterias or you can implement multiple criterias in sum ifs function. एठी हम गोटे कंडीशन देखुछे जदि मल्टीपल कंडीशन चाहिबो तमे एठी यूज करि परिबो. ओके सो ब्रैकेट को क्लोज करो एंटर. Am I getting the same result? Yes, sir. So that means sum if function can allow only one condition but sum ifs function can have multiple conditions. So multiple conditions केमते हम एटा करिक देखिया. So a problem टा करिक देखिया. Okay. Equals to so see जदि तुम प्रोग्राम टाको जदि ए जो क्वेश्चन टाको तुम ब्रेक डाउन करिवो एथि टास्क कोन करियर अछि गाइस. What is the task here? 1 plus product sales by Saloni software. No. What is the task? I'm not asking you the condition. So, मतलब
Exactly. मते Sales. some find out करियर अछि, that is my task. So you have to break down कि मते कौन करियर अछि. First होची मते task find out करियर अछि. Okay. So task होची मोर main बा base function बा task होची sum करिवि. Okay. Sum मतलब मु करिवि तापरे कौन एते condition कौन अछि. So condition 1 होची sales manager हवा दरकार कौन सलोनी. This is my condition 1. Yes or no? Condition 2 होची. Okay. So condition 2 होची product should be 1 plus. This is my condition 2. Correct? Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. sum if function रा तमे जदि parameter गुडा देखिबो equals to sum if equals to sum ifs रा जदि parameter देखिबो गोटे होची sum range criteria range 1 criteria 1. So first होची sum range. Okay. Criteria range 1 criteria 1. Okay. So sum range रा में को column रा range टा पे mention करिया Sales. Sales, sorry, sales. sales. Correct. Sum range रे sales रा range टा पे mention करिया. Okay. So criteria range मोर first criteria देखो criteria range को column होगा दरकार. अरे Sales इटा होची manager. प्रथम कंडीशन देखो सेल्स मैनेजर सलोनी तो क्राइटेरिया रेंज सेल्स मैनेजर कॉलम रो ए रेंज टा होगा दरकार. यस और नो? Yes, ओके. सो एटा है होगा दरकार सेल्स मैनेजर कॉलम रो रेंज. क्राइटेरिया 1 कोन Data. कोनटा तुम फाइंड आउट करियो चाहछो ए कॉलम अंडर रे. Saloni. Saloni, sir. करेक्ट. सो क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज होची सेल्स मैनेजर कॉलम रो रेंज टा को सिलेक्ट करिवो. क्राइटेरिया 1 टा होची सलोनी एंड व्हाट हमर एटी केतरा कंडीशन अछि. Dita. Duita. दुईटा कंडीशन अछि. ओके. सो एबे मते कुह 2 सो क्राइटेरिया रेंज 2 रे मु कहार को कॉलम रो रेंज टा पास करिवि. Product. करेक्ट. प्रोडक्ट रो रेंज टा पास करिवि. आ तापरे क्राइटेरिया 2 रे मु को वैल्यू पास करिवि. 1 plus. 1 plus. परफेक्ट. सो एठी होची प्रोडक्ट तापरे एटा हलो 1 प्लस. सो जदि तुमको गोटे को प्रॉब्लम जदि तुमको कॉम्प्लिकेटेड लागुची यू कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दिस. मु कोन मेन मोर टास्क कोन सम रेंज रे बा बेस टास्क मु कोन फाइंड आउट करिया चाहूची मु को फंक्शन यूज करबी. व्हाट इज माय बेस टास्क मु कोन करिया चाहूची. एठी देखला टोटल सेल्स माने कोन सम रेंज टोटल बाहरिबो. सो सम इज योर सम इफ्स फंक्शन भी यूज करबो. कहार सम रेंज दबो ना तुमे टोटल सेल्स. सो सेल्स रो सम रेंज को बाहर करिवो. ओके. सो क्राइटेरिया रेंज 1 कोन फर्स्ट कंडीशन होची manager has to be Saloni and product should be 1 plus. So criteria range 1 रे sales manager column रे range value range pass करिवो. criteria 1 रे Saloni. criteria range 2 रे product then criteria 2 रे 1 plus. So let's write this function now. So sum ifs. Okay. tab press कला को capital रे पड़े आछे. तुम लिखले function गुडा sum ifs. Okay. इट सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर दो. टैब प्रेस कला माने ब्रैकेट आसीगला सम रेंज तमे कहलो कि एटरम सम रेंज. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल बैकस्पेस. ओके. कॉमा. सो क्राइटेरिया रेंज 1. सो क्राइटेरिया रेंज 1 होची सेल्स मैनेजर. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल बैकस्पेस. कॉमा. ओके. सो क्राइटेरिया 1 शुड बी सलोनी. तापरे ये हे गेला गोटे कंडीशन. सो क्राइटेरिया रेंज टा और क्राइटेरिया वैल्यू टा में पास कर देले. सेकंड होची क्राइटेरिया रेंज 2 कोन. सो क्राइटेरिया रेंज 2 इज योर दिस वन. कंट्रोल शिफ्ट दिस. एट तो को कौन सर्च करिया चाहू छु 1 प्लस. करेक्ट. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बुझिल. सो फर्स्ट होची सम रेंज. सो सम रेंज मु सेल्स कॉलम रो रेंज देली. ओके. तापरे क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज 2 1 होची मोर सेल्स मैनेजर एंड क्राइटेरिया 1 रो वैल्यू शुड बी सलोनी को मु फाइंड आउट करबी ए रेंज रे. तापरे 1 प्लस को मु फाइंड आउट करबी ए रेंज रे प्रोडक्ट रे. ओके. सो व्हेन यू प्रेस एंटर यू विल गेट
0. Why 0? Is there any space? हाँ देखो जानी पार कौन पे प्रॉब्लम है 1 plus पूर्वरु there is a space ठीक ଅଛି so that is the reason why it didn't count I mean it didn't give you sum total okay so we can do one thing insert a row so how to clean this data how to remove the spaces Trim. Trim. bracket start karo okay so it will remove spaces from both the side eta ko double click karo now data is cleaned you have removed space from both the side copy right click paste value okay so now let's delete this can you see this value populated एटी आगु 0 देखौतला राइट आमे फंक्शन रे किछि चेंज करछ ऑटोमेटिकली वैल्यू पळे आसला जेतेबेले हम डेटा को क्लीन कर देले कारण a1 प्लस पूर्वरु स्पेस थिला क्लियर Yes, sir. Yes, sir. okay so जदि तमे इंस्पेक्ट करिया चाहछो डबल वैलिडेट करिया चाहछो whether your function is giving you correct output or wrong output so what you can do is go to data filter करो मैनेजर मु कोन कहतली सलोनी मन रखिता 2,20,685 rupees 220,685 so let's select Saloni okay and product has to be 1 plus okay okay so sales ro dekho 220,685 Saloni ro total sales देखो Yes, तुम sir. जो किसी सिलेक्ट करूचो ना ऑटोमेटिकली स्टेटस बार रे एवरेज काउंट मैक्स सम फंक्शन चैप्टर देखि दोछ okay so 220,685 Saloniro total sales in 1 plus product okay खाली 1 plus को सिलेक्ट करके तार सम बार करछ so clear everyone Yes, sir. okay any questions कार किसी के न बुझि पारलो ए फंक्शन टा do I need to reiterate repeat सर स्पेस टा केम जे मैं डिटेक्ट करबा जदी किछ प्रॉब्लम देखौची so से डिटेक्ट करबोनी सेटा मैनुअली चेक कलो मते डाउट आसले कि स्पेस रे ही प्रॉब्लम हेतिबो आइदर स्पेस रे प्रॉब्लम हेतिबो नले सलोनी नारे किछ गोटे मिस्टेक हेतिबो आइदर स्पेलिंग मिस्टेक हेतिबो ओके सो एटा दिस हैज टू बी टेकन केयर before applying any formula so this is part of data cleaning जेमति कि मोटे कहूछ data cleaning माने ए डेटा सेट मो पाखर अछि ओके so data analyst रो काम कोन data analyst रो काम होचे suppose ए प्रोडक्ट पूर्व तीनटा स्पेस अछि आ परे चारटा स्पेस अछि तमे जानि न ना so तमे कोन करियो बेसिकली तमको द डेटा क्लीनिंग पे कोला इक्वल्स टू देलो ओके इक्वल्स टू trim ब्रैकेट देलो date ओके COGS एटा दरकार नै करो ओके एबे मु ए जो डेटा गुडा सब क्लीन हे गला कॉपी करली ओके राइट क्लिक करली पेस्ट वैल्यूज एबे किछि भी आउ नथिबो प्रॉब्लम आउ कोट स्पेस नथिबो स्पेस को रिमूव कर देली मु जदी डाउट करूची मो डेटा क्लीन नाही बोली तो मते लेट्स से टेक्स्ट फंक्शन गुडा का होला टेक्स्ट फंक्शन गुडा मु कोन करबी इक्वल्स टू trim okay trim this okay ये सब क्लीन हो जाइए कॉपी करो राइट क्लिक पेस्ट वैल्यूज सॉरी देखो रिमूव कर दिया ठीक है संगे संगे गोटे मिनट रे सब क्लीन हो एबे कोठी भी स्पेस नथिबो बुझियला मु कोन कली आउ थर देखौची इक्वल्स टू trim ब्रैकेट स्टार्ट कली और फिर ताको सिलेक्ट कली ए जो b2 को एंटर ओके तापर b2 रो एटा को ड्रैग कली राइट को चारटा कॉलम अछि टेक्स्ट रो और पिता गवर्नमेंट कनाडा 1 प्लस
एतिके गला एतिरे ट्रिम फंक्शन यूज हबनी कारण बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू करेक्ट यस और नो न्यूमेरिक Yes. वैल्यू तापर yes sir डबल क्लिक कर देले डबल क्लिक कला को करेक्ट वैल्यू पड़सिला कॉपी ओके राइट क्लिक पेस्ट वैल्यूज आई एम नॉट पेस्टिंग एनी फॉर्मूलास काई ना इतने की डायरेक्ट पेस्ट करला मन फॉर्मूला पेस्ट हे जिवो जोटी बैकग्राउंड रे किछि आसीबन एटा हे गल ओके सो तापरे तमे भाबुचो कि आ भीतर किछि गोटे न्यूमेरिक सपोज मु एठी ए लिखि देछि एठी एनए लिखि देछि ओके सो ए सब जिंस करिया पे न्यूमेरिक एठी एक कॉलम ता कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यू रखिछ कि नाही ओके न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करछि कि नाही तमे गोटे फंक्शन अछि इक्वल्स टू ओके लेट्स से प्रोडक्ट सेल्स प्रॉफिट sorry sales profit this control V right there okay so equals to is number करी गोटे फंक्शन अच्छी is number ब्रैकेट रे पास करो so it is giving you true एटा नंबर की नहीं गोटे काम करिया equals to is number फॉल्स सी देखो एडी फिल्टर मारो फिल्टर कली चेक कली देखो फॉल्स माने न्यूमेरिक वैल्यू नो यस और नो धरा पड़ी गले कोडी ना Yes. वैल्यू okay so these are part of data cleaning activity also so before you apply any of the visualization you have to make sure your data is clean and proper excel रे proper column रे proper data type माने यदि तुम टेक्स्ट करछो से सेठी डेटा माने proper let's say data clean हेतिवा दरकार ओके न्यूमेरिक माने कोनोसी नॉन न्यूमेरिक मे बी टेक्स्ट वैल्यू किछि नथिया दरकार देखो एठी एनए आसला एनए मु लिखली सो फर्स्ट ट्रू आसला एठी फॉल्स पळे आसला एठी फॉल्स पळे आसला एठी जेतु एनए आसला ए कैलकुलेशन रा ठीक रहलानी कारण तमे लिखला F17 - G17 जोटा होची कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सो आसलानी एठी भी सेंते आसलानी ओके सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट सो अंडरस्टूड केमती जानिया गोटे न्यूमेरिक कॉलम रे नॉन न्यूमेरिक वैल्यू केमती बसे जायछि कि नहीं एटा चेक करिया बोले देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड इज नंबर से सेल रो रेफरेंस दियो जदी नंबर हेतिबो ताहले ट्रू जदी आउ किछ टेक्स्ट हेतिबो ताहले एटा फॉल्स आसीबो सो फिल्टर रो तमे जान दो तुम फिल्टर लगेबो जान दो कि कोडा फॉल्स या भीतर किछ रहिछि कि या भीतर किछ फॉल्स रहिछि कि या भीतर किछ फॉल्स रहिछि चेक करला जान लो जोटी फॉल्स ला सिलेक्ट करला देखिबो आ से डेटा तुम करेक्ट न मिलिथिबो तो यू हैव टू talk to the person who has shared this data with you okay clear Yes sir. Yes, sir. so you understood you can apply multiple functions suppose I want to find out average profit okay average profit in Canada by Rashmi. Okay, so tell me guys, how many conditions I have here? Two conditions. Two conditions. Which function should I use? Which ifs function Average. should I use? Average ifs. Average. So equals to average ifs. Okay, so average ifs. So average range has to be which column? Who column Profit. average range? Profit, Profit. right? Because average profit I want to find out. Okay, this is your best task. You want to find out average and the column has to be average range. Okay.
This one, the column has to be average, profit. So copy, comma, okay. So then Canada. So what is my criteria range 1? Which column range should I give? Country. Country. Perfect. Control backspace. So country is Canada. See, this is not case sensitive, okay, but this is spelling and space sensitive. तमें जदि spelling और space से दबारे भूल space जदि दे देलो कि spelling mistake कर देलो तो definitely output रे error माने correct value आसीबनी. So मैं select कर देलो मुझे Canada capital लिख लेम किसी फर्क पड़िबनी. I told you this is not case sensitive. Upper letter माने capital और small letter लिखले किसी फर्क पड़िबनी. एटा होची मोर criteria range 1. एटा होची criteria 1. Okay, criteria is nothing but a condition 1. Okay, what is my second criteria range? What has to be my second criteria range, guys? Manager. Sales manager. Thank you, na Rosmita hochi mora second condition. I can find this. I can find the sales manager in sales manager column. Control Shift down arrow. Control backspace. Comma. Okay. So I'll write Rosmita here. Rosmita. So Rosmita ro Canada re average profit hochi 491 टंका 491 rupees. Okay, so if you want to inspect it, देखो Canada country होची Canada. Okay, so this one is Rashmita. Okay, so profit देखो profit both 313 325 अलग अलग numbers अच्छे. Control Shift down और करो इधर देखो. What is the profit average? 491.9772727. Okay, 491.97. Okay, check here. हमको correct answer मिल जी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So tell me guys, suppose I want to find out in OnePlus for the models sold more than 4. Okay, so understood the question here? Understood the question? Total sales in OnePlus for the model sold more than 4,000. Sold more than 4K rupees. Total sales or average sales, whichever. Total sales in OnePlus phones for the models sold more than 4K rupees. जो OnePlus phone 4,000 टंकार अधिक टंकार सेल ହେଇଛି ତାଙ୍କର total sales ବାହାର କର. Okay, got it? Understood the question or not? Yes. Okay, तो माने जदि हमको मैन्युअली फाइंड आउट करियर अछि मु लिखिबे डेटा फिल्टर OnePlus phones OnePlus. Okay, जो फोन 4,000 टंकार अधिक टंकार सेल ହେଇଛି so it would option ଅଛି. Okay, number filters greater than 4000. Oh, sorry, no need to write this greater than.
because it's already greater. It is greater than 4,000. So a phone guda, okay. OnePlus ର ଯୋଉ ଫୋନ୍ ଗୁଡା 4,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସେଲ୍ ହେଇଛି, I want to find out the total sales, which is 4,28,270 rupees. Okay. So ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବା? Equals to, okay, equals to, how many conditions we have, guys? Two conditions. Conditions. So what are those? Saloni and OnePlus. No. OnePlus sorry. and the price OnePlus should be and more than 4,000. more than 4K. Correct. The phone has to be, okay, the product has to be OnePlus. The sales should be greater than 4K. Okay. So I have to find out the total sales. That means I have to use sum ifs. Okay. Sum ifs. Then sum range has to be this one, right? This is my sum range. I want to find out total sales. And the criteria range has to be control shift this. And it has to be OnePlus phone. OnePlus, comma, okay. And sales should be greater than 4,000. Okay. So first is sum range I have given. Sum range could sales column total sales find out kariya chahuchi. OnePlus phone ro puni second condition hochi जोटी सेल्स मोर देन 4K तमर जो प्रोडक्ट मॉडल रो जोटी 4,000 टंकर अधिक वाला मॉडल जो तार मु सेल्स फाइंड आउट करे चाहूची. ओके. सो एटा होची से एई कॉलम रे मु फाइंड आउट करि परिबी. प्रथम टा होची OnePlus, सेकंड टा होची सेल्स जदी OnePlus रो सेल्स ग्रेटर देन 4,000 हेतिबो. सो तारो क्राइटेरिया रेंज 2 रे सेल्स कॉलम रे रेंज देली एटी खाली लिखली ग्रेटर देन 4,000 एमते लिखियो पड़िबो. एंटर. हमको यही आंसर मिलतला, राइट? 4,28,270 rupees. Yes or no? Yes, So sir. let's check. 428,270. If you're not sure, 428,270. OnePlus. Okay. Sales number filter greater than 4,000. Okay. 428,270. Correct. So clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now the next question is total number of sales in June 2007. Okay. So total number of sales in June 2017. Can anybody at least explain me what is the question? कोई परियो कौन question? कौन find out करियर अछि? The sum of sales where the date, where the month is June and year is 2017. No. Okay. The number of sales, like count, we have to count the Oh. number of sales in June 2017. Exactly. So total number of sales. It is not total sales or total transactions. I'm saying total number of sales. That means how many transactions. केतेटा सेल ହେଇଛି ତମେ ଦେଖିବ ଏଠି data filter date. Okay. So date 2017 ମୁଁ expand କଲି June ମାସ. Okay. So 2017 June ମାସରେ କେତେଟା transaction ହେଇଛି? So count होची 31. Actually 30 କାହିଁକି ନା date header ଟାକୁ ବି count କରୁଛି. So header କୁ ଛାଡିଲା ପରେ 30. 30 ଟା transaction ହେଇଛି June 2017 ରେ. Okay. So the question ଟା କେମିତି?
So କୋଉ function use ହବ? count ifs. Counting. Count ifs function use ହବ, okay? So ifs bracket start करो criteria range କାହିଁକି count if function directly count ही କରିବ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ sum କରିବାର ଥିଲେ sum range sum column ର range ଟା pass କରୁଥିଲେ so count ତ କୋଉ ବି column ରେ apply ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଇଏ କିଛି count sum range ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇ function ରେ ସେମିତି count range କରି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି direct ଆସିଲା criteria range ତମର condition କୋଉଠି ତମେ condition କୁ find out କରୁଛ so criteria range ହଉଛି କୋଉଟା କହିଲ କଣ Date. condition June, Date. sir. Date. June and 2017. ଜୁନ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଜୁନ୍ 2017 ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ମିଳୁଛି ଏମିତି ଆମକୁ ଏମିତି ଜୁନ୍ 2017 କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ଗାଇସ୍ ସୋ ଏଠି ତୁମକୁ ଜୁନ୍ 2017 ବା ଇଦର ଜୁନ୍ 2017 ଏମିତି ମିଳୁନି କି ଆମକୁ ଜୁନ୍ 2017 ଏମିତି ମିଳୁନି ଓକେ ସो କୌଣସି ମାନେ ଇଦର ଏମିତି ଆମେ ପାଉଛେ और हमें एमती भी पाउछ 2017 ओके एमती भी हमको मिलुछि ना एमती हमको पूरा हमको कंप्लीट डेट टा मिलुछि ओके सो कंप्लीट डेट जेहेतु मिलुछि हमें जेते बळे जून 2017 हमको कोहा गला तो हमरो ए आर हे दरकार 0106 2017 रो ओके जून केते मासो 30 दिन राइट केते मास 30 दिन राइट सो सिंगल कोड देले बेले बेले जो वैल्यू टा न्यूमेरिक थाए ओके तो मते सिंगल कोड रे देतबो सेटा टेक्स्ट रे कन्वर्ट हे जिवो तो फॉर्मेट टा चेंज हे होचे सेते मु सिंगल कोड टा दे देली पूर्व ओके तापरे ता माने कोन दिस 30 06 2017 okay so june masar transaction mane it has to be greater than equals to this date and less than equals to this date clear yes or no Yes, sir. Yes. Sir. okay so jodi greater than equals to first june 2017 bhitor jo date thibo less than a bhitor jeti ki date fall hoto that means we are trying to find out june for transaction so how to write this so equals to count ifs okay count ifs first criteria hala date control shift down arrow control backspace so condition has to be greater than equals to okay greater than equals to first june 2017 ये गोटे कंडीशन होला ओके कॉमा ये गोटे क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 रो वैल्यू पे पास क्राइटेरिया रेंज 1 होची ए जो रेंज टा क्राइटेरिया 1 रो वैल्यू होची तो आउ थरे सेकंड कंडीशन टा होची सेम ओके सेम डेटा को तुम सिलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट डाउन करो कंट्रोल बैकस्पेस ये होची क्राइटेरिया रेंज 2 रो वैल्यू और एठी लिखो लेस देन इक्वल्स टू 30 जून 06 2017 ब्रैकेट क्लोज एंटर 30 टा ट्रांजैक्शन थिला जून मास रे Yes, sir. क्लियर स्टूड केमति लिखा हला Yes, Yes, sir. sir. स्टूड formula text this you can see the formula here Sir, there is no in between function in Excel.
No. Okay. I mean, here we can't use it. We have and, okay. We have and where we can write something like if the date is greater than this and less than this, then it will return us true or false, something like that. But this function, if we have to pass this, or what we can do is, see, I'll tell you one thing. Data duplicates. Okay. So जब तुमको select करार अच्छे duplicate value को remove करार अच्छे go to data tab रे remove duplicates. Okay. More ethical sales manager अच्छा. Okay. Managers. तो अर्पिता टोटल सेल्स में केमती फाइंड आउट करिवे इक्वल्स टू Sum If if sum ifs okay sum ranges this control backspace comma okay so then then okay sales then manager criteria range has to be sales manager B2 this to B. okay then this is Arpita. Arpita. I can write Arpita if I want I can write here Arpita or I can pass a cell reference this okay Yes. enter correct Yes, sir. okay so I can drag this but this is not correct because see Mm. formula text this देखो एटी तुम यदि देखिबो देखो J3 J4 J5 एमानकर मैनेजर्स करो रेफरेंस करेक्टली नउची राइट yes or no The J3 sales J4 reference is not correct, sir. it is taking the relative reference Arpita Priya Saloni समस्त ने रिजल्ट होची but I am not sure about this output बेले बेले भूल भी हेतै पारे काहे कि ना जत्ते बेले सी जत्ते बेले मो फाइंड आउट करूची ए जो समिप्स रे जो रेंज टा पास करची देखो कैलकुलेशन टा एठू ना अर्पिता रो देखो F2 रो सेल्स टा होची बट प्रिय रो देखो F3 एउटू जाउची सेल्स बुझ परछो Yes, sir. सलोनी रो एउटू सेल होची यदि सलोनी रो ऊपर दिटा रेकॉर्ड थिबो सेटा इग्नोर हे जिवो काउंट होबनी राइट Yes, sir. yes or no Yes, sir. तुम देखो चंदन रो F6 रो माने चंदन रो F6 एउट स्टार्ट होची F21 2157 पर्यंत बट तुम भाबो जदि फर्स्ट रेकॉर्ड टा कि सेकंड रेकॉर्ड टा चंदन हेतु से ट्रांजैक्शन टा काउंट होबनी राइट सो व्हाट आई हैव टू डू हियर गाइस Dollar. Fix the column. Fix. I have to fix it okay so fix okay F4 रो टा को फिक्स कर देले ओके एटी कॉलम रो किछि काम नै एटा फिक्स करले फिक्स कर देले समस्त से रेफरेंस को यूज करछन समस्त को पई कि सेल्स रो बा जो सेल्स मैनेजर कर रेंज समान ये 2152 रो F2153 B2 रो B2153 सो क्लियर Yes, sir. ना कार किसी डाउट रहला इतरे
So why did we fix the sales manager column is like rows in sales manager column? सेल्स मैनेजर तो ठीक नउची राइट J3 J4 J5 J6 समस्त करेक्ट नउची राइट सेल्स मैनेजर टा हम एउठ यूज करू रेफरेंस करछे राइट Yes, sir. ओके सेल्स मैनेजर इज टेकिंग अर्पिता नउची प्रियर नउची J4 सलोन नउची J5 किंतु एटा जे कि जोटी सर्च करिवो सेटा को मैं फिक्स कर दोचे बिकॉज़ सपोज सी यदि एटी देखो देखो यदि तुम I am asking why did we fix the rows in the B column, like sales manager column? B column this one Yes, sir. सब गुड़ के एउठ ही काउंट करिवो ना ओके इवन प्रिय जदि ऊपर रह जायतिबो प्रियर हम एउठ ही सर्च काउंट करतिबा गॉट इट Yes, sir. ओके तो तुम ए डेटाटा सॉर्टेड नो राइट ए डेटाटा ए रे माने ए बेसिकली तुम भाबुथिबो कि डेटाटा एमती ही सॉर्ट हे के अछि इट्स नॉट लाइक दैट राइट डेटा देखो तुम सपोज मु चंदन रो काउंट नबाकू चाहूचे ओके सो चंदन रो मु नउचे लेट्स से 8 नै थांते लेट्स से F7 और B7 रो नै थांते सो B7 रो नेले ऊपर चंदन रो B6 रो अछि गोटे रेकॉर्ड आ गोटे रेकॉर्ड एठी भी थाई पारे रेकॉर्ड रो किछि सीक्वेंस ठीक नै तो बेटर मु सेते पय कि सेल रो पूरा समस्त रो पूरा फर्स्ट रो लास्ट पर्यंत ही दे देबी फिक्स दे देबी तार भितर ही तुमे फाइंड आउट करो क्लियर ना किछि डाउट रहला एतरे Clear, sir. ओके सो इग्नोर हे Hmm. जबो जदी तमे एटा को ना प्रॉपर स्टार्टिंग रू नो न तम भाबो मु एटा फास्ट आ भितर प्रथमे एटी अर्पिता फाइंड आउट करे चेष्टा करछि तापरे अर्पिता रो रेस्पेक्टिव सेल्स मु फाइंड आउट करछि ओके सो सपोज भाबो रश्मिता सो रश्मिता देखो तमे चिंता करो लेट्स से आशीष की रश्मिता लेट्स से 8 हमर ठीक अछि बट आशीष तमे अज्यूम करो आशीष 8 थांता 8 थांता सो आशीष 8 टिके चेंज करले रिजल्ट चेंज हे जिवो देखो आशीष 8 थांता सो आशीष रो रेफरेंस लेट्स से जदि मु फिक्स कर न थांती ये बी लेट्स से बी 10 रू नहीं थांता कि बी 9 रू नहीं थांता सो ए आशीष रो ट्रांजैक्शन टा मिस हे थांता राइट यस और नो Yes, sir. Yes, sir. सो सेति पय कि टू बी इन सेफ साइड तमे स्टार्ट टू एंड रेंज तक पूरा फिक्स कर दियो एउठी स्टार्ट करो और ए लास्ट पर्यंत 215 P or something 215 पर्यंत क्लियर ऑल क्लियर Yes, sir. Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट थिंग इज तुम जो डेट टा कहलो सो डेट टा देखो इक्वल्स टू let's say June 2017 so June 2017 रो total sales sales in June 2017 so equals to let's say equals to sum ifs okay sum resolution this comma so criteria range ला date हम find out करिया चाहूँ control shift down arrow backspace comma greater than 01 06 2017 comma पूर्ण date को select करो control shift down arrow control backspace 30 okay 06 2017 Sir, less than equal to and greater than equal oh to. sorry my mistake less than equals to greater than equals to less than equals to clear ठीक ଅଛି
So equals to formula text ये function टा समस्त पाखे आसुन थियो 13 and above रे आसीरो ओके सो देखो एटा होची सम रेंज ओके एटा ला सम रेंज एटा ला डेट रो रेंज फर्स्ट डेट होची ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस डेट रो रेंज लास्ट डेट होची लेस देन इक्वल्स टू सो आ भीतर जिते डेट फॉलो होतो तारा ट्रांजैक्शन टाइम 103099 देखो एटी जति मु डेटा फिल्टर ओके ओके cells 103099 correct 103099 ठीक अछि चाहून तमे एमती लिखि देबो लेट्स से start date end date तो start date रे लिख ले 01/06/2017 end date होचे 30 okay 06/2017 ठीक है so writing this formula here equals to okay so equals to sum ifs okay sum ifs sum range which is okay so criteria range 1 so criteria range 1 which is say date greater than equals to and I'm use करके so we can give this reference okay तापरे comma देके only same date को मैं दूँचे same date okay comma less than equals to this and तोड़ data okay okay बुझियला Yes, sir. equals to formula text a formula so this is your sum range okay sum range clear this Yes. is your date range criteria range 1 criteria range 1 और criteria 1 so हमें कौन कले एटा को गोटे स्ट्रिंग कले केमती ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू आको डबल कोट रे कवर करे एम्परसेंड हम यूज कले टू जॉइन दिस टू ओके सो k13 होचे एटा greater than equals to this date पूर्ण date range criteria range 2 so this is criteria range 1 okay this is criteria 1 this is criteria range 2 and c criteria 2 so it is less than equals to e date now for example it am kahi ki deli because suppose aguru jana report create korchi and the report which is being used see report is used or report is consumed by a person who is not expert in excel okay so he knows just to change the date he cannot change the date inside a function jodi ame previously jemti lekhi dile ताको एमतिया फंक्शन लिखे रिपोर्ट डिलीवर कर दो एंड यूजर बा क्लाइंट को they may not be they are not aware to change the date inside the function कोटी डबल कोट हटि गला कोटी कॉमा हटि गला कोटी एगा ताको एरर तो तम मु ताको इंटरफेस देली कि एटा होची मु तुमको दे दूची एमती बने कि दे देली ओके सो एट तुम डेट पास करो से एतिक तो चेंज करि परिबे ना जणे ए डेट चेंज कर देबे मु से चाहू जे फर्स्ट माने चाहू देखिया पे जुलाई रो ओके 17 कर देली 31 7 देखो जुलाई रे ट्रांजैक्शन पड़े आसला
Yes, sir. ओके सो मु था 1/1/2017 पूरा वर्षकर ट्रांजैक्शन देखिया चाहूँ तो ट्रांजैक्शन पड़ा इसला अंडरस्टूड Yes, सो sir. बेसिकली तमे तमे ताकू चांस देलनी कि तमे फंक्शन रे हाथ लगा तुम पे मु गोटे इंटरफेस क्रिएट कर देली रिपोर्टिंग इंटरफेस यू जस्ट चेंज द नंबर और चेंज द डेट एंड सी द आउटपुट सरला ता बैकग्राउंड रे कोन होची कोन नै तुमको जाने दरकार नै ओके even there is a way you can protect this cell so cell रो बैकग्राउंड रे कोन फंक्शन अछि से माने देखि परिबेनी so clear everyone Yes, sir. Yes. Yes, sir. okay so month date specific this date to this date ye month ro transaction ye year ro transaction okay so you all can do it by breaking down your dates like this first date to 15th first date to 31st okay 1st January 2017 31st December 2017 वर्ष का ट्रांजैक्शन आसले तुम चाहो खाली देखिया पे कि लेट्स से जून पर्यंत देखिया पे चाहो जुलाई पर्यंत देखिया पे चाहो जस्ट टू चेंज द डेट ओवर हियर तुमको आउटपुट एटी पळे आसीबो बिकॉज़ हमें फंक्शन एती हैंडल करछे ओके सो एंड यूज करा के कॉन्केटिनेट करिया पे कि ओके सो सपोज into the first name, nickname, okay, last name. Arup Kumar equals to what I can do is I can do like this, ampersand this, ampersand this. Okay. Now that तुम चाहो गोटे स्पेस आसिलानी स्पेस पे कि तुम कोन कर परिबो ampersand परे स्पेस ऐड कलो पुनी गोटे ampersand दलो एठी स्पेस ऐड कलो गोटे ampersand दलो okay otherwise there is something called text join okay ये टा गोटे method there is another method eta ampersand use kari tome join karo another method hochi text join okay so equals to text join okay text join रे first hochi delimiter okay delimiter कोन रे join करे मु चाहूची space रे join करे delimiter रहया दरकार space मु तीनटा string को जते बेले join करबी there should be a delimiter which is space by using space you are joining these three so true ignore empty cells okay so एठी ठीक अछि ignore empty cells मार देले true तापर को तीनटा cell को join कर select कर ले bracket close अरूप कुमार में है this string is joined by a space यदि मैं चाहूँ ची मुझे स्पेशल कैरेक्टर दबा को I can use that exactly asterisk देनी so अरूप कुमार मेहर asterisk यूज करी join these are called को delimiter यूज करी तमे join करेबो तीनटा string को text join function रे हे परिबो नल and so and तो समस्त सबुतरे अछि एटी जेंति and SQL रे सेंति plus right yes or no SQL रे plus right Yes, sir. yes so it is in the and so तमे एमती भी कर परिबो so and लगे कि दीटा string को जेंति हमें join करू छे एटी सेंति basically मु greater than equals को गोटे string रे रखली and k13 ए वैल्यू टा पड़ेसला तमाने डायरेक्टली मु एटी लिखु छी जे greater than मु लिखली greater than equals to 01012017 okay so meaning of greater than equals to and k13 रो meaning होछु मु ए string टा ही लिखु छी greater than equals to a string so a string टा हम लिखले एटा गोटे बेनिफिट हला जे रिपोर्ट जने यूज करछि he is a non technical person he may not know how to write such kind of complex formulas
ताको जदि तुम फॉर्मूला सब धरे देलो से माने कोन एटी फॉर्मूला भीतर टाइप करी कि स्पेशल कैरेक्टर कमा अलग जगह ए जगह दे करी एटी कमाटा दे देला अलग जगह कोडी कमा दे दो तो ऑब्वियसली आउटकम आसीबनी आउटपुट आसीबनी तुम ताको एटार एक्सेस देलनी तुम फंक्शन किसी चेंज कर दरकार नै तुमको टोटल सेल्स तुम डेट वाइज देखियार अछि तुम डेट ये पकई दियो तीटा डेट स्टार्ट डेट एंड डेट तापर तुम रिजल्ट दे सो क्लियर एवरीवन Yes, sir. Yes. So guys काली 7:30 रे अवेलेबल हबो हे परियो समझते Yes, sir. Yes, sir. Sir, evening में. हाँ इवनिंग 7:30 Yes, sir. ओके 7:30 5-10 मिनट लेट ले चलिबो 7:40 सुधा सेशन स्टार्ट करी सो ये गोटे फ्लो रे अछि सब चाहूँ जे एटा काली कंप्लीट कर दो एटा बहुत इंपोर्टेंट ओके देन लुकअप फंक्शंस सूर्य सर नेबे अपन ओके so let's connect tomorrow around 7:30 okay so must try karo 7:30 रे join करे okay so that's it for today I'll be sharing this file with you all so explore karo किछि doubt हले we'll discuss it in the next class देखो एक्सेल रो एमती किछि फॉर्मल नोट्स नै तमे नोट्स एमती जोड चाहबो YouTube गूगल रो YouTube लिखि परिबो बट एक्सेल रो प्रैक्टिकली जानियाटा ही इंपोर्टेंट एक्सेल रे केही तुमको कहबेनी कि काउंटी फंक्शन कोन सम इफ कोन ए कोन एमती केही किछि कहबे तुमको सीधा प्रॉब्लम देबे करबे लिखो हमको एमती आउटपुट दरकार से थियोरेटिकल पढले किछि फायदा हबनी ओके तुम चाहिले सम इफ गूगल चार्ट जीपीटी रू तुमे नोट सर्च कर दे परिबो बट pointless okay ifs options several ifs functions in excel in normal if function को देखो you want to create notes एवढं तुम उठे दियो चार्ट जीपीटी रो so counts the number of cells that meets particular meets multiple criteria so criteria माने condition देखो criteria range criteria 1 criteria range अरे कौन लिखला criteria range so criteria range 1 अच्छा count ifs okay got it sum ifs रे sum range criteria range 1 criteria range 2 criteria 2 okay sum ifs okay product range this average ifs average range criteria 1 criteria range 2 criteria okay that's it for today let's connect tomorrow okay so thank you everyone Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Night. Good night, sir. Bye.